नमस्कार मुझको स्वागत करुच्ची आडा 247 ओपीएससी चैनल रे आपण मैंने देखुवे यहाँ गोटे आमर नुआ इनिशिएटिव थंबनेल रु आपण देखि पारुथिबे एवं इनिशिएटिव टी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स इनिशिएटिव टी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स ये करंट अफेयर्स माध्यम रे हमें चेष्टा करिबु प्रति सप्ताह करंट अफेयर्स आपण को सामना को आनिबा पई प्रति सप्ताह करंट अफेयर्स को अपडेट करिबा पई तेणु ये छोट प्रयास गोटे आपण जो मैंने ओपीएससी एक्सक्लूसिवली दौरान अन्य एग्जाम भी दौरान से भी हेल्प कर जो मैंने एक्सक्लूसिव ओपीएससी दौरान से भी हेल्प कर ये इनिशिएटिव टी तेणु आपण मैंने डेफिनेटली हमको कमेंट सेक्शन में निश्चिंत भाव में जनइबे जदि आपन को किसी लगे किसी एडिशन कमेंट आपण फीडबैक आमर निहाती दरकार सो आपण फीडबैक रु ही आम ग्रो करूँ फर्दर तेणु डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में फीडबैक देवे ठीक अच्छे तेज करंट अफेयर्स वीकली बेसिस रे स्टार्ट करवा आज आम स्टार्ट करुचे लास्ट वीक रो करंट अफेयर्स आम कवर करवा लास्ट वीक हूँ 28 अक्टोबर रु नवेम्बर 7 पर्यंत जहाँ भी आपंकर करंट अफेयर्स अच्छी न्यूज नेशनल इंटरनेशनल हो कि आपंकर इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो एनवायरनमेंट इकोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सन्स इन न्यूज अवार्ड गुड़िक जिते माने डिफरेंट सेक्शंस गुड़िक अच्छी से गुड़िक आम करंट अफेयर्स सेशन माध्यम रे कवर करने चेष्टा करूँ ठीक अच्छे जो मैंने ऑनलाइन अच्छा मुझे रिक्वेस्ट करी जिते आपंकर किसी यदि चैनल्स गुड़िक अच्छी शेयर जदि करें कर दिंतु सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन ठीक अच्छे देखो फर्स्ट हूँ आपंकर नेशनल न्यूज फर्स्ट हूँ आपंकर नेशनल न्यूज रे आपंकर फर्स्ट टॉपिक टी देखंतु प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना फर्स्ट हूँ प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना ठीक अच्छे प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना द प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना is a scheme by the government of India that aims to improve the quality of life for the tribal communities. ठीक अच्छे ये स्कीम टी हूँ आपंकर फ्लैगशिप स्कीम जोटा आम कहे प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना वन बंधु तेणु जेहेतु ट्राइबल्स माने फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऊपर डिपेंडेंट से वन बंधु ना दि जाइए क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज तेणु ये बेनिफिशियरीज को माने ट्राइबल कम्युनिटीज एटा को मन रखिथे ये बेनिफिशियरीज को माने ट्राइबल कम्युनिटीज ठीक अच्छे कारण ट्राइबल कम्युनिटी दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेस फॉर द लाइवलीहुड आपण माने देखिथिबे जो माइक्रो जो फॉरेस्ट माइक्रो नुहे सेटा होची माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेस जोटा को कहा जाए माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेस माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेस ये माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेस गुड़िक कौन माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेस हूँ जमी आपंकर झुणा लाख जो गुड़ाक आम कहे दे आर नोन एज माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेस से माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेस हूँ से लाइवलीहुड ठीक अच्छे तेणु ट्राइबल मानकर जेहेतु फॉरेस्ट रिसोर्सेस हूँ लाइवलीहुड ये टार्गेट क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज तार ऑब्जेक्टिव या गोल कौन द स्कीम्स गोल इज टू क्रिएट ए मोर इक्विटेबल सोसाइटी बाय इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज मोर इंक्लूसिव सोसाइटी इक्विटेबल सोसाइटी मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी improving the socio-economic profile or socio-economic life of the tribal communities, socio-economic conditions of the tribal communities. तेणु जो ट्राइबल कम्युनिटीज माने अछंती सेमानकर सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को इंप्रूव करबा पय द स्कीम फोकसेस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव राइट होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द सेंस कि आपण माने कहि परिबे 360 डिग्री डेवलपमेंट
ए 360 डिग्री डेवलपमेंट कौन 360 डिग्री डेवलपमेंट होची एक तो सेमानंकु लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दवा स्किल डेवलपमेंट ऊपर फोकस करिवा एजुकेशन को फोकस करिवा हेल्थ सेक्टर को फोकस करिवा तेणु 1960s रे आपण देखिबे गोटे ट्राइबल पॉलिसी आस्थिला 50s या लेट 50s या अर्ली 60s रे जवाहरलाल नेहरू को द्वारा से गोटे ट्राइबल पॉलिसी आस्थिला जहाँ को हमें पंचशील बोली को पंचशील फाइव प्रिंसिपल्स फॉर द ट्राइबल सेटलमेंट और ट्राइबल वेलफेयर पॉलिसी एटा जवाहरलाल नेहरू को द्वारा अणा जाइथिला तार मेन ऑब्जेक्टिव कौन है जो ट्राइबल मानक को भाई भाव में सेटल कर ट्राइबल मानक को भाई भाव में इंटीग्रेट करने जो क्वेश्चन रेज करागला से समय देयर वाज डिस्कशन अमंग द लीडर्स कि ट्राइबल मानक को भाई भाव में आम मेन स्ट्रीम रे इंटीग्रेट करवा तो गोटे ओपिनियन आसला कि सिंपली से तंकर जो ओल्ड एज प्रैक्टिसेस गुड़िक अच्छी लेट्स स्टॉप दैट एंड लेट्स देम इंटीग्रेट इन द मेन स्ट्रीम जमती नॉर्मल लाइफ जो मैंने जमती बंचुचंदी तो पुणी सेठी मेंशन करागला पुणी सेठी गोटे ओपिनियन आसला कि नहीं जदि आमे तांकु इमिडिएटली इंटीग्रेट करबा पई चेष्टा करबा रेजिस्टेंस ही पारे तांकर जो इंडिजिनस कल्चर अच्छी शायद वो कल्चर रु समान माने माने डिपार्ट ही जिवे दूर को आसी जिवे से कल्चर धीरे धीरे लोप पाई जिवो तो ये सब जिनस को देखिकी अल्टीमेटली जो डिसीजन निया गला कोन ना विद इन दैट आपण कहि परिबे लोकेशन विद इन दैट रीजन से माने जो भली भाव रोहुचंदी तंकर ओल्ड एज ट्रेडिशन कस्टम को लेके दे शुड कंटिन्यू विद दैट बट से को जो बेसिक फैसिलिटीज गुडी को प्रोवाइड करा जिवा कथा वी शुड प्रोवाइड दोज बेसिक फैसिलिटीज सही जगह रे हमें स्कूलिंग फैसिलिटीज से को प्रोवाइड करिवा सही जगह रे से को हॉस्पिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड करिवा से को स्किल सेट प्रोवाइड करेवा ये होची टारगेट थिला तेणु से इनिशिएटिव को आगो को नहीं कि बर्तमान ये जो स्कीम टी को लॉन्च करा जाइछि होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स 360 डिग्री एस्पेक्ट्स को फोकस करा जाउछि टारगेट करा जाउछि ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इन द सेंस कि सेमानकर कैपेसिटी को एनहांस करबा लाइक स्किल समान को प्रोवाइड करबा समान को अवेयर करबा रिगार्डिंग दिस लेट्स से सैनिटेशन हेल्थ इश्यूज को लेकिन से को अवेयर करबा तेणु ये कैपेसिटी बिल्डिंग ऊपर फोकस करा जाउतला एरिया ऑफ फोकस कौन देखो द स्कीम फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज स्लाइटली तौक पड़े कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज तेणु तांकर जो कल्चरल हेरिटेज गुड़िक अच्छी ताकू आमे कोठी ना कोठी कॉम्प्रोमाइज न करिकी ताकू इंटैक्ट रखिकी एट देयर ओन प्लेस वी शुड प्रोवाइड दोज बेसिक फैसिलिटीज एटा होची मेन आइडिया मु गोटे जिनस आपको कहबी ट्राइबल जो आपणकर जमती मु कहली पंसिल ये रेस्पेक्ट रे आपणकर जो एडिशनल इनिशिएटिव्स गुड़िक अच्छी आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन रे भी ट्राइबल मानन को प्रोटेक्शन पाई लॉज गुड़िक अच्छी सेकेंड होची कोन ना आप देखिए ट्राइबल सब प्लान भी लॉन्च करा जाइथिला ट्राइबल सब प्लान यानी कि ट्राइबल एरिया रे सेमानकर इंडिजिनस कल्चर को प्रोटेक्ट करबा पे हमर 5th एंड 6th शेड्यूल भी अच्छी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे जमती कहली ये सब डायमेंशन को भी आपण कवर करि परिबे व्हाइल यू राइट जदि प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना ऊपर जदि क्वेश्चन आसे यू कैन टच दोज डायमेंशंस कि ट्राइबल एबे भी जमती आपण देखिबे जमती अंडमान निकोबर जो जरुआ ट्राइब अच्छी से आज भी सही टाइप रो कल्चर रे से माने रही चंदी से मान को डिस्टर्ब करा जोने दे हैव देयर ओन इकोसिस्टम राइट आपण माने सुनी थिबे से स्टोरीटी जेतोले बहुत गुडे रिसर्चर्स माने अछंदी स्कॉलर्स माने अछंदी दे डू वांट टू एक्सप्लोर दोज माने तंकर कल्चर तंकर फूड तंकर रिलीजियन गोटे अलगा तंकर पॉलिटी गोटे अलगा तंक भीतर तंकर से जो पॉलिटिकल एसोसिएशन भी अच्छी से मानकर लीडर भी अच्छा तेणु से जो अंडमान निकोबर रे जने जर्नलिस्ट से एक्सप्लोर करबा पई जाइथिले तांको बो एंड आरो रे मारी दिया जाइथिला ट्राइबल मानक द्वारा द रीजन हो जी मे बी आपण जदि से माने फील कले
ये बाहरी हमको डिस्टर्ब करबा को आसी या एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज वुड बी देयर तो डेफिनेटली से अटैक करेंगे। ठीक अच्छे। तो ये हूँ प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। फाइनेंशियल असिस्टेंस देखिबा द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रपोजल फॉर डेवलपमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट यस स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करिवो कि कौन स्कीम्स गुड़िक से प्लान करूचंदी या कौन प्रपोजल से माने रखुचंदी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ऑन दैट बेसिस हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करू। एबे जेमती आपण देखिबे ओडिसा रे जो हाथ खर्च योजना आपण देखिथिबे हाथ खर्च योजना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट यस अ स्कीम रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन हाथ खर्च योजना रे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स माने अछंदी से माने 9th क्लास आउ 11th क्लास समय रे आमे सेमान को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करबा हाथ खर्च योजना। तो रीजन कौन ना 9th पर से माने पढ़ा कंटिन्यू करूना दे आर नॉट गोइंग फॉर दिस 10th एंड द फर्दर स्टडी। 11th क्लास रे जो माने अछंदी से माने आपण देखिबे 11th क्लास पर से माने 12th पढ़ुना कारण 12th क्रॉस कले तो आपण जने ग्रेजुएशन को जाई परिबो। तो सरकार वर्तमान चिंता करछंदी हाथ खर्च योजना रे माने वर्ष को 5000 रुपीज 9th आउ 11th स्टैंडर्ड रो स्टूडेंट्स मान को प्रोवाइड करा जिवो। 9th एंड 11th स्टैंडर्ड रो स्टूडेंट्स मान को प्रोवाइड करा जिवो। फल कौन हम से माने पढ़ा कंटिन्यू करि परिबे कारण निजर खर्च से निजे जदि बहन करूचंदी दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडी। तो ये थिला इनिशिएटिव सरकार तेणु फाइनेंशियल असिस्टेंस डेफिनेटली प्रोवाइड करा जिवो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन या प्रपोजल जो गुड़िक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट गुड़िक सबमिट करेंगे से बेसिस रे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जिवो। इम्प्लीमेंटेशन द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए मिशन मोड अप्रोच ऑफ नीड बेस्ड आउटकम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। मिशन मोड approach of need based outcome oriented project। need based in the sense as per the requirement need based outcome right as per the requirement and तार ठीक implementation भी मैटर करियो। ठीक implementation आपण देखंतु जो नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जोटा कहूचे आपनकर सिलेबस रे अछि जीएस पेपर 3 रे सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी हिसाब रे ये नक्सलिज्म रो आरंभ कोठ होई छी ओबियसली जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट आपनकर अछि ठीक अछि से तार ओरिजिन होची से जो अनइवन डेवलपमेंट अच्छी या ट्राइबल डेप्रिवेशन कारण बहुत ट्राइबल एरिया रे आपण देखिबे से ट्राइबल एरिया रे से माने होचंती नक्सल सिंपथाइजर बोली हमें कहूचे कारण दिन रे से माने आपण देखिबे नॉर्मल कॉमन मैन टाइप रो थिबे राति रे से माने नक्सल सिंपथाइजर थिबे से माने फैसिलिटेट करता रीजन कोन ना कोटी से को ये गोटे फील हुए डिस्क्रिमिनेशन डेप्रिवेशन तो से जिनस को हमको एड्रेस करने को पड़ी द रूट कॉज ऑफ नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ओके फाइनेंशियल आउटले द स्कीम हैज ए फाइनेंशियल आउटले ऑफ 26,135.46 crore from 21-22 to 25-26 राइट 21-22 to 25-26 ये होची फाइनेंशियल आउटले स्लीपर सेल। चलो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट टॉपिक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्चेस डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर टू ऑनर ब्रेव मार्टर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स launched digital memorial of Vellore in New Delhi, a heartfelt initiative dedicated to honoring the sacrifices of brave personnels who laid down their lives in the line of duty। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर करके गोटे लॉन्च करा जाइछि जो माने ब्रेव मार्टियर अछंती ब्रेव मार्टियर जो माने शहीद सेमानक पई कोठी ना नुआ दिल्ली रे न्यू दिल्ली ए हार्टफेल्ट इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू ऑनरिंग द सैक्रिफाइसेस ऑफ ब्रेव पर्सनल हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो माने रेलवे रो प्रोटेक्शन पई जो स्पेशली ताकू मिंट या स्पेशली जोटा को बना जाइछि गठन करा जाइछि। The digital memorial of Vellore is a digital platform that allows citizens to pay their respect to the martyr by decorating their photos and candles and garlands। तो obviously
फूल एवं फोटो ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा ही से फॉर द ऑल टाइम से मेंटेन करा जिवो. द वेबसाइट आल्सो फीचर्स द नेम रैंक फोटो ऑफ द 14 आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मार्टियर हु डाइड लास्ट ईयर. तो लाइन ऑफ ड्यूटी रे जो माने कर डेथ हो जाउची. आरपीएफ इज ए पैरामिलिटरी फोर्स. पैरामिलिटरी मिलिटरी एंड पैरामिलिटरी अपन जानथिबे जेंती सीआईएसएफ दे आर नॉट मिलिटरी पैरामिलिटरी. ठीक अछि. जेंती डॉक्टर ये होचंदी मेडिकल प्रोफेशनल्स या मेडिकल पर्सनल्स. पैरामेडिकल को माने जेंती नर्सेस कंपाउंडर जोटा आम कहे से पैरामेडिकल. एनीवे तो पैरामेडिकल स्टाफ जो आपनकर सॉरी पैरामिलिटरी फोर्सेस होची आरपीएफ. इट्स नॉट मिलिटरी फोर्स अंडर द इंडियन रेलवेज दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ रेलवे पैसेंजर्स. आपण देखिबे जीएस पेपर 3 रे आपण देखिबे जो फोर्सेस गुडिक अच्छी सिलेबस टी यदि आपण जानिथिबे फोर्सेस गुडिक अच्छी मैंडेट ऑफ दोज फोर्सेस यदि सिलेबस आपण देखिथिबे मैंडेट ऑफ दोज फोर्सेस फंक्शंस ऑफ दोज फोर्सेस आपनकर मन थिबो. ठीक अछि. जीएस पेपर 3 रे तेणु ता सहित आपण एटा को इस ए पर्टिकुलर टॉपिक को लिंक करि परिबे. इंडियन रेलवेज दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ रेलवे पैसेंजर्स railway property and railway areas. The RPF was established in 1957 to protect railway property and was granted the status of paramilitary force in 1985 and headquarters in New Delhi. Okay. जमती आपण देखिथिबे ट्रेन रे गला बेले आरपीएफ रो समाने जो विथ वेपन समानकु रिस्पांसिबिलिटी दिया जाय तो प्रोटेक्ट द रेलवे और रेलवे प्रॉपर्टी या पैसेंजर्स जो माने सेमानकर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ठीक अछि. तो आरपीएफ विषय स्लाइडली एटी आपण देखि परुथबे. तो केबे एटा को गठन करा गला 1957 टू प्रोटेक्ट द रेलवे प्रॉपर्टी एवं पैरामिलिटरी फोर्स हिसाब रे एटा को केबे मिलला स्टेटस 1985. सोराही पेंटिंग्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी presented unique handcrafted artifacts representing different regions of India gifted to Russian President Vladimir Putin during the recently held BRICS summit Kazan, Russia. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गिफ्ट करिसंती व्लादिमीर पुतिन को हैंडक्राफ्टेड आर्टिफैक्ट्स जोटा कि आपनकर सोराही पेंटिंग बोली ताको कहा जाउछि. सोराही पेंटिंग राइट. कोठी ब्रिक्स हेइथला एटा को मन रखिबे कारण ए वर्ष तो ऑब्वियसली नुहे नेक्स्ट ईयर पई एटा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे. कोठी हेइथला ब्रिक्स रा समिट रशिया काजान रे हेइथला एवं ब्रिक्स काफी इंपोर्टेंट नेक्स्ट ईयर पई जो मन एग्जाम दउचंदी. द रीजन होची प्रथमे होची ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस हेइति पई कारण बाकी 5टी कंट्रीज से माने नुआ ऐड हेइचंती. 5टी कंट्रीज दे हैव बीन जॉइंड ब्रिक्स ब्लॉक एंड अर्जेंटीना लास्ट मोमेंट रे विथड्रॉ करिछि मेंबरशिप रु. अर्जेंटीना लास्ट मोमेंट रे विथड्रॉ करिछि. ब्रिक्स समिट इन काजान रशिया रे कौन इनिशिएटिव निया जाइछि से जिनस भी स्लाइडली देखिबे. जेतले ब्रिक्स आसीबो टॉपिक डेफिनेटली हम ता विषय डिस्कस करिबो. इनिशिएटिव कोन निया जाइछि ए सब जिनस ब्रिक्स काफी इंपोर्टेंट. दिस गिफ्ट्स each selected for their cultural significance and historical roots showcased countries' diverse traditional art form, including Jharkhand's Sorahi painting. This Sorahi painting को जगह झारखंड रो Sorahi painting and Maharashtra's mother of pearl sea shell vase and Worli painting. ठीक अछि. सोराही पेंटिंग जदि देखिबे तार ओरिजिन यार ओरिजिन होची कोडा Jharkhand Sorahi painting number 1 and another one is Maharashtra's mother of pearl sea shell vase and Worli painting. ठीक अछि. mother of pearl sea shell vase and Worli painting.
Sorahi painting shows the motifs such as animals, flowers, plants, geometric figures, and representation of Shiva depicted in the form of Pasupati in the anthropomorphic and zoomorphic forms. This painting reflects the distinctive style of Ganju community in Bihar and Jharkhand. तो particularly को community द्वारा एटा आपन को देखिबा को मिले बिहार एंड झारखंड झारखंड एटी देखते झारखंड सोराई पेंटिंग किसी बिहार अंचल भी देखा मिले तो सोराई पेंटिंग आपण देखिपारे ये पिकॉक यानी मयूर चित्र होती तो सेठू आप गोटे जिन जापर एनिमल्स को से प्लेस या स्थान दियंती फ्लावर्स को से स्थान दियंती प्लांट्स को से स्थान दियंती कारण जो ट्राइबल पेंटिंग गुड़िक थाए या से जो ओल्ड एज पेंटिंग गुड़िक थाए से नेचर को पेंटिंग रे स्थान दे था नेचर को स्थान दे था कारण जो आप जमी देखिए सोशल मीडिया रे आपन किसी लिखुचन दैट मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग राइट तो से तो सोशल मीडिया नथिला तेणु द वे टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ द पेंटिंग इज दिस लाइक द इमोशंस थ्रू द पेंटिंग से माने निजर इमोशंस को एक्सप्रेस करुले थ्रू पेंटिंग एवं इमोशंस कौन था बिकॉज दे वर लिविंग इन द नेचर या विद द नेचर यू कैन से तेणु जेहेतु प्रकृति सहित से बंचुले तेणु से एनिमल्स प्रेजेंस देखिए फ्लावर प्लांट जियोमेट्रिक फिगर्स भी से देखिए एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पशुपति इन द आंथ्रोमॉर्फिक एंड जूमॉर्फिक फॉर्म्स इन द सेंस ह्यूमन बीइंग रो एवं एनिमल ये दुईटी जाकर प्रेजेंस भी देखा मिले डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ गांजू कम्युनिटी इन बिहार एंड झारखंड गांजू कम्युनिटी बिहार एंड झारखंड ओके आर्ट एंड आर्किटेक्चर रो इटा हुची पार्ट सोहराई पेंटिंग सेंटर लॉन्च्ड CRS मोबाइल ऐप फॉर बर्थ्स एंड डेथ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह launched the civil registration system mobile application. This initiative aims to integrate technology with governance. The application facilitates the registration of births and deaths, making the process seamless and hassle-free. तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन द सेंस कि बर्थ एवं डेथ यार डिटेल्स आपण कारण बर्तमान आपण देखिए सर्टिफिकेट्स आपण को दरकार यू नीड टू रजिस्टर दैट सो रजिस्ट्रेशन आपण कोठी करि परिबे ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रे द लॉन्च ऑफ द एप्लीकेशन अलाइंस विथ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ 2023 सहित ये एप्लीकेशन को अलाइन करा जाइछि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. This law mandates that all the births and deaths occurring from October 1st, 2023 must be digitally registered. ठीक अछि अक्टोबर 1 2023 पर जहाँ भी बर्थ एंड डेथ होतबो ताकू डिजिटली रजिस्टर करा जिवो. ठीक अछि डिजिटली रजिस्टर करा जिवो ताकू. This application developed by Registrar General and Census Commissioner of India. This application developed by Registrar General and Census Commissioner of India. The app is expected to reduce the time required for this registration seamlessly. Okay. तो generally जो time period अच्छी time slot अच्छी suppose 1 month हो 20 days हो जहाँ भी अपन समय लगुची registration कला परे अपन को उटे certificate जो मिलुची the time can be reduced if it would be in the digital form or civil registration system रे जदि आपनकर सेटा को हमें करूचे. अमृत उद्यान unveils cultural tribute कोणार्क व्हील रेप्लिका. रिसेंटली न्यूज रे थिला आपण माने देखिथिबे कोणार्क प्रेसिडेंशियल इस्टेट रे या प्रेसिडेंट र भवन जो अछि राष्ट्रपति भवन जोटा को जाय से जगह रे गोटे कोणार्क व्हील को प्लेस करा जायछि राइट. देखिबा सेटा को to promote India's rich heritage and introduce traditional, cultural and historical elements, the Indian government has installed 4 sandstone replicas of the prestigious Konark Wheel
आर द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। तो राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर रे सेटा को प्लेस करा जाइछि कोडा कोणार्क व्हील को प्लेस करा जाइछि द रेप्लिकास अमृत उद्यान जानथिबे जोटा मुगल गार्डन थिला सेटा को हमें कर दैछु अमृत उद्यान कारण मुगल गार्डन टा टिके मुगल जिनसटा थिला वर्तमान सेटा को हमें अमृत उद्यान रे कन्वर्ट कर दैछु। द कोणार्क सन टेम्पल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट is the inspiration for the replica. The temple was built in the 13th century by King Narasingha Deva in the shape of a chariot for the sun god. ठीक अछि तो जो कोणार्क मंदिर प्रथम तो फैक्ट होची यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गोटे सेकंड फैक्ट होची कोन कोणार्क मंदिर र शेपटा को बळी गोटे रथ बळी आपण देखिथिबे। टेम्पल आर्किटेक्चर जतळ आपण पढिबे जानिथिबे त्रिरथ पंचरथ सप्तरथ ए सब टाइप रो अछि। तो कोणार्क टेम्पल रो आपण देखिथिबे सेटा गोटे रथ बळी कारण तार सामने रे घोड़ा लागि थाए हॉर्सेस आर देयर पछरे तार व्हील गुडी को थाए जोडी का रथर चकर सदृश देखिबा को मिले। द टेम्पल वाज बिल्ट इन द 13th century by King Narasingha Deva in the shape of a chariot for the sun god. The wheels around the temple walls are believed to be represent the 12 Jodaic signs and the Dharma Chakra of Buddhism. ठीक अछि धर्म चक्र ऑफ बुद्धिज्म एंड 12 जोडाइक साइन बोली ताकू कहा जाए द व्हील्स अराउंड द टेम्पल। नेक्स्ट द पीएम मोदी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस एट एम्स ऋषिकेश एयर एम्बुलेंस सर्विस कोठी लॉन्च कले ऋषिकेश रे। तो रीजन होची एक तो हिली एरिया डिफिकल्ट टेरेन तेणु सेठी एयर एम्बुलेंस रा आवश्यकता अधिकार होची यस और नो तेणु से सरकार को द्वारा सेटा को लॉन्च करा जाइछि राइट। Inaugurated the country's first free helicopter emergency medical service at AIIMS Rishikesh. The first of its kind healthcare initiative aims to bring faster life-saving medical assistance to accident victims. Faster life-saving medical assistance to accident victims and patients from remote and critical areas in Uttarakhand during the golden hour. So within very small span of time जिनते आपण इजीली ताको रिलोकेट करि परिबे। गोल्डन आवर जोटा का मैं कहूचे फर्स्ट एयर एम्बुलेंस द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड अंडर द संजीवनी योजना along with other healthcare projects with the outlay of 12,850 crore for the various regions across India. Okay, संजीवनी योजना अंडर रे ही एटा को लॉन्च करा जाइछि फर्स्ट एयर एम्बुलेंस। इंटरनेशनल न्यूज देखिबा ब्राजील becomes the second BRICS country after India not to join China's BRI. China's BRI Belt Road Initiative देखिबा in a major setback to China's Belt Road Initiative, Brazil has decided against joining Beijing's multi-billion-dollar initiative, becoming the second country after India in the BRICS bloc not to endorse the mega project. Brazil, headed by President Lula da Silva, will not join BRI, instead seek alternative ways to collaborate with Chinese investor. The Belt and Road Initiative, known in China as the One Belt, One Road, and sometimes referred to as the New Silk Road, is a global infrastructure development strategy adopted by the Chinese government in 2013 to invest in more than 150 countries and international organizations. ठीक है, न्यूज को देखिबा हमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रथम जिनस होची काहार प्रोजेक्ट चाइनार प्रोजेक्ट ठीक अछि केबे लॉन्च करा जायतिला 2013 रे लॉन्च करा जायतिला 2013 रे एटा को लॉन्च करा जायतिला। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्चुअली कोन ना जोटा आपनकर सिल्क रूट अछि
सिल्क रूट अच्छी, ये सिल्क रूट गोटे हूँ मराइन सिल्क रूट, आउ गोटे हूँ टेरिटोरियल सिल्क रूट या लैंड सिल्क रूट बोली आपण तो कहि परिबे। अप्रोप्रिएट वर्ड हूँ लैंड सिल्क रूट। तो ये लैंड सिल्क रूट हूँ जदि आपण देखिबे सेंट्रल एशिया रू यूरोप सेंट्रल एशिया एंड देन आपण करि परिबे साउथ एशिया देन साउथ ईस्ट एशिया एटा को कनेक्ट होची। मैरीटाइम सिल्क रूट होची जेमती एटा जानिथिबे आपण इंडियन अरबियन सी इंडियन ओशन ता सहित एटा भी कनेक्ट करूची जो आपनकर सुएज कैनाल देकी जो रोड टा जाईची प्लस एपटे केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रिका रो ठीक अच्छे कनेक्ट करुच्ची एंड पुणी एपटे आसिक आपंकर मालाका स्ट्रेट देकी साउथ ईस्ट एशिया रीजन को कनेक्ट करुच्ची। तो ये मैरीटाइम सिल्क रूट आउट हूँ लैंड सिल्क रूट ये हूँ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अच्छी कारण से समय जो ट्रेड गुड़िक होता यही रूट रे ही ट्रेड होता तेणु चाइनार कहवा कथा हूँ दोज ओल्ड एज ट्रेड रूट्स सेटा को से रिवाइव करने को चाहूँगी से ना दि जाइए न्यू सिल्क रूट या सिल्क रोड बोली आप कहीपर से न्यू सिल्क रोड माध्यम सिल्क ये ना दि जाइए कारण टेक्सटाइल या सिल्क आप जानी ट्रेड होता तो एक्जाक्टली से न्यू सिल्क रोड या सिल्क रूट माध्यम से माने कौन कर चाइना चाहूँगी तार हेजिमनी डोमिनेंसी तार प्रेजेंस को सबु जगार ये करने फील करने तेणु से माने कौन करुच्ची ना अंडर दिस से इन्वेस्टमेंट काफ़ी करुच्ची इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रेलवे कनेक्टिविटी ठीक अच्छे तो ये टाइप इन्वेस्टमेंट काफ़ी करुच्ची। तो चाइनार जहाँ भी आपड़ कहीपर एक्टिविटीज गुड़िक दैट इज सस्पिशियस इन नेचर। व्हाई सस्पिशियस इन नेचर ना फर्स्ट एक तो से पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एटा को कवर करने को चाहूँ फर्स्ट जिनस सेकेंड जिनस सस्पिशियस ये कारण चाइनार इन्वेस्टमेंट गुड़िक जदि आप आफ्रिकार देखिए द नेचर ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन आफ्रिका ताकू कहुच्छी नियो कॉलोनियलिज्म कहीं कहना सेतबेले जमती नियो कॉलोनियलिज्म सेतबेले जमती ब्रिटेन हो या जो कॉलोनियल मास्टर्स गुड़िक थे से कौन करते डेप्ट दे ऋण दे से ऋण भार में कौन करते दबेकी रखुले। तो सही टाइप आप देखिए चाइना कौन कर इन्वेस्टमेंट ना रे ऋण दवा ना रे से कौन कर जो पुअर कंट्रीज गुड़िक अच्छा आफ्रिका से माने ऑब्वियसली दे कांट रीपे दोज लोन बैक टू द चाइना सो चाइना से रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करुच्ची जो माइनिंग या मिनरल्स गुड़िक अच्छी आपंकर चाइना रे ताकू एक्सट्रैक्ट करुच्ची ठीक अच्छे प्रोजेक्ट्स गुड़िक निजर फायदा पाई सेठी करुच्ची एयरपोर्ट से बिल्ड करुच्ची निजर जो इंडस्ट्रीज गुड़िक अच्छी ताकू रॉ मटेरियल से एक्सप्लॉयट करुच्ची ये सब जिनस आपको देखा मिले। तेणु न्यू कॉलोनियलिज्म से तो कहुच्छे तो एक्जाक्टली सेम थिंग विथ दिस बेल्ट रोड इनिशिएटिव इंडिया से बेल्ट रोड इनिशिएटिव को जॉइन करी नाही इंडिया बॉयकॉट करिछि बेल्ट रोड इनिशिएटिव को कारण एमती भी चाइना सहित आमर एनिमिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो से इंडिया को देखिकी ब्राजिल ऑल्सो बी डिसाइडेड नॉट टू जॉइन दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव राइट कारण जदि वन्स आप जॉइन करेंगे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना रे तंकर प्रेजेंस धीरे धीरे आपण टेरिटरी एवं सराउंडिंग द टेरिटरी आप देखिए से चाइनीज प्रेजेंस आपको देखा मिले ठीक अच्छे। तो ये हूँ करंट अफेयर्स कौन ना ब्राजिल बिकम्स द सेकेंड ब्रिक्स कंट्री आफ्टर इंडिया नॉट टू जॉइन चाइनास BRI। Saudi Arabia begins construction of world's largest building. Saudi Arabia begins construction of world's largest building. Saudi Arabia has commenced construction on the Muqaf, aiming to become largest building globally. This monumental project is located in Riyadh and represents a $50 billion investment. So Saudi Arabia has commenced construction of Muqaf, the aiming to become largest building globally.
This monumental project is located in Riyadh and represents a 50 billion investment. It's scheduled to be completed in 2030. The Mukab skyscraper is part of the wider Murabba district, Riyadh's new downtown. The project will contain over 1 lakh residential units and 9,000 hotel rooms, as well as more than 10 million square feet shops and 15 million square feet of office space. So, generally, largest building हिसाब रे यदि क्वेश्चन एथुर एक्सपेक्ट आपण करिवे कि को कंट्री रे लार्जेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा जाउची तो आंसर होची ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया. ठीक अछि गोटे डिटेल केतेटा बिल्डिंग ता भीतर अछि केतेटा होटल सेते इंपोर्टेंट नोहे हम पाई. नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आइलैंड सेल्स इनटू कॉस्ट स्टॉर्म. ओके, world's first green energy island sails into coast storm. In the heart of the North Sea, the ambitious green energy project is taking shape. Named after Belgium Princess Elizabeth, this groundbreaking energy island represents a bold step towards renewable energy transformation. At a bustling shipyard along the North Sea coast, workers are constructing massive concrete structures that will form the foundation of this world first initiative. देखो ग्रीन एनर्जी आइलैंड सेल्स इनटू कॉस्ट स्टॉर्म यानी कि दुनियार सबुठू फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आइलैंड तमने से जगह कंप्लीटली आपनकर इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी सेटा ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू रु ही आसुची एतिकी मन रखिबार अछि. को जगह रे सेटा होची आपनकर हार्ट ऑफ द नॉर्थ सी रे सेटा को लॉन्च करा जायछि. The project was launched 2021 to help Belgium increase its wind energy production and reduce its reliance on the fossil fuel. जो conventional energy sources गुड़ी को अच्छी fossil fuel, coal, petroleum etc. सेठू निजरो reliance को कम करेगी सबने green energy को shift हो जाती. However, supply chain issues have caused cost to more than triple, reaching estimates over 7 billion. So cost overrun पाई न्यूज रे एटा थिला बट एटा को मन रखथिबे फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आइलैंड सेटा कोठी नॉर्थ सी रे एटा होची हम पाई इंपोर्टेंट नॉर्थ सी रे ग्रीन एनर्जी आइलैंड. Nepal to provide free cancer treatment for children under age 14 in public hospital. The Nepal government will provide cancer treatment to children under 14 free of cost in the designated 3 public hospitals starting from November 16, 2024, such as Kanti Children's Hospital located in Kathmandu, Bhaktapur Cancer Hospital located in Bhaktapur, and BP Koirala Memorial Cancer Hospital located in Bharatpur, Chitwan. Okay. ठीक अछि एते डिटेल जानिबा भी दरकार नहीं कारण केवल मन रखिथे जे नेपाल अंडर 14 एज ग्रुप रो फ्री कैंसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूची. टाइफून कोंग री अनलिसेस फरी ऑन ताइवान with strong winds. Typhoon Kongre made landfall in Taiwan in 31st October 2024, prompting a swift response from authorities as they took extensive precautions to ensure public safety. Schools, offices, financial markets were closed, and thousands of residents were evacuated from high-risk areas. तो टाइफून होची कोन आपनकर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोली आपण कहि परिबे. ट्रॉपिकल साइक्लोन चाइना एंड ताइवान रो कोस्ट रे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिबा को मिले सेटा होची आपनकर ता ना होची टाइफून. ठीक अछि. साइक्लोन रो ना गुडी को आपण जानिथिबे जेंती आंसर करिवे आपण ऑस्ट्रेलियन कोस्ट रे जो साइक्लोन देखा जाए तार ना कोन यदि के ऑनलाइन थिबे आंसर प्लीज करंदु. तो टाइफून आपन को देखिबा को मिलिबो. The Central Weather Administration said Super Typhoon Kongre is the largest cyclone to hit Taiwan in 27 years. The last time a typhoon of comparable strength with a radius of maximum wind
larger than 300 kilometer, made landfall and was Typhoon Harv in 1996, according to Taipei Times. Nathaniel Sarvando, head of the Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, said the super typhoon has maintained its strength while moving northwestward near Betens, the Manila Times reported. Willy correct. तो ये जो साइक्लोन जो कोस्ट रे तार ना गुड़ी को ताकू मन रखिबा पई चेष्टा करिवे कारण ये क्वेश्चन आपनकर पीवाई क्यूज रे आपन देखिबे से क्वेश्चन ऑलरेडी आपनकर पचरा जाई अछि कि को कोस्ट रे को साइक्लोन टी देखा जाए जंती टाइफून होजी चाइना एवं ताइवान कोस्ट रे विली सेमती ऑस्ट्रेलियन कोस्ट रे सेमती आपन देखिबे यूएस कोस्ट रे कोन देखा जाए तो ये साइक्लोन गुडा को मन रखतिबे आपन मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रो क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि ओके स्टेट न्यूज देखिबा India's first writers village. India's first writers village was inaugurated in Thano village, Dehradun. Thano village, Dehradun, 25th October 2024. Thano village, Dehradun. The village was inaugurated by former President Ramnath Kovind, Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami. तो फर्स्ट राइटर विलेज को जगार इनागुरेट करा जाइछि थानो विलेज देहरादून राइट थानो विलेज देहरादून उत्तराखंड किए इनागुरेट कले फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद तांका सहित थिले उत्तराखंड गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एंड द सीएम धामी द विलेज वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक who is also a distinguished writer. Ramesh Pokhriwal Nishank, who is also a distinguished writer. The idea behind the village is to provide writers with a calm and creative environment to write their works. The writers village is situated 24 km from Dehradun, the first of its kind in India. तो जिमती आपण जानी थे रस्किन बॉन्ड भी काफी इंडिया रे रही कि से आई थिंक मसूरी रे रही कि से लेखुले तंगर जो जेहेतु ठंडा क्लाइमेट शांत परिवेश तेणु दैट गिव्स यू द क्रिएटिविटी सो दैट यू कैन राइट तेणु से राइटर्स विलेज ना दिया जाइए थानो विलेज देहरादून को उत्तराखंड रे ठीक अच्छे Rajasthan launches Investment Promotion Scheme 2024. The Rajasthan government launched the Rajasthan Investment Promotion Scheme, REAP 2024. The state government has come up with monetary incentives, proposed the launch of new policies, simplifying departmental clearance, adoption of technology under the Rajasthan Investment Promotion Scheme. It's a comprehensive package of attractive incentives for setting up businesses in the state. So Rajasthan launches investment promotion scheme. That means the startup, to promote the startup, to encourage the startup. RIPS is a comprehensive package. The scheme was introduced ahead of the Rising Rajasthan Global Investment Summit scheduled for December 2024 in Jaipur. Right? Rising Rajasthan Investment Summit to promote startup businesses in Rajasthan, etc. Pune Forest Department proposes Misocarnivoros Conservation Project. Pune Forest Department has initiated an important conservation project. This project focuses on the 5 wild animal species: wolf, jackal, fox, civet, hyena. Collectively, these species are termed as Misocarnivorous. मन रखते हैं Misocarnivorous. ये Misocarnivorous रे को मने आसी थांदी wolf, jackal, fox, civet, and hyena. The project will focus on the species in the grasslands of Baramati, Solapur, Indarpur, Daund, Ahmednagar. The department will also study how the leopard population affect the Misocarnivorous.
Okay. The department is currently conducting a survey to determine the population area and density of the grassland. The survey is expected to be completed by the end of October, after which drone mapping will take place. तो मीजो कार्निवरस जो एनिमल्स गुड़िक अच्छा से आमको कंजर्व करने को पड़ो तो से पुणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लॉन्च कर प्रोजेक्ट ठीक अच्छे एवं पर्टिकुलरली जदि आप देखिए ग्रासलैंड बारामती सोलापुर इंदपुर दौंड एंड अहमदनगर ये जगह कंजर्व करा जाउछि मीजो कार्निवरस एनिमल्स मानक समस्त को कंजर्व तो करने को पड़ो आपंकर बायोडाइवर्सिटी ना इम्बालांस हबार चांसेस थाए कार्निवरस हेले भी जमती आप जानी जो भलचर शागुणा जोटा आम कहे शागुणार पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डेड हो जाता बर्तमान पुणी थे वल्चर पॉपुलेशन को रिवाइव करा जाउछि कंजर्व करा जाउछि आर्टिफिशियल माने ब्रीडिंग सेंटर्स गुडी को आमे स्टार्ट करिछे वल्चर को कंजर्व करबा पई कोन पई ना फूड चेन जो आपनकर अछि से फूड चेन रो जो आपन जानिथिबे एनवायरनमेंट इकोलॉजी रे से गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट कारण हम जो वेस्ट मटेरियल गुडी को अछि वेस्ट गुडी को अछि आपनकर एनवायरनमेंट रे ताकू से माने कोन करन कंज्यूम करन सो दैट आपनकर जो एनवायरनमेंट रे तारो बैड इंपैक्ट को मिनिमाइज करा जाई पारे तेणु से भी गोटे पार्ट गोटे कंपोनेंट गोटे थोटियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इन इडुकी चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन is set to inaugurate the Thotiar hydroelectric scheme in Idukki, Kerala. 40 megawatt project is noteworthy for its efficient use of water power generation. Officials anticipate an annual output of 99 million units of electricity. The project uses water from the Devyar stream, which connects to the Periyar river. A check dam has been constructed across the Devyar river, a tributary of river Periyar in Idukki district, Kerala. This dam is primary water source for the Thotiar project. तो Thotiar hydroelectric होची कोठी इडुकी केरला रे को नदी रु पानी सेठी ताको प्रोवाइड करूची देवियार स्ट्रीम या देवियार रिवर आपण कहि परिबे देवियार स्ट्रीम व्हिच कनेक्ट्स टू द पेरियार रिवर एंड तर प्रोजेक्ट रो कैपेसिटी केते 40 मेगावाट. PM launches C-295 aircraft plant in Vadodara. The Prime Minister Narendra Modi inaugurated a new plant in Vadodara. This facility will manufacture the C-295 aircraft for the Indian Air Force. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez attended the event, marking an important milestone in India's military aviation capabilities. C-295 MW is a versatile transport aircraft, is a capacity 5 to 10 tons and a maximum speed of 480 km per hour. Okay, C-295 aircraft, Indian Air Force, capacity 5 to 10 tons, maximum speed 480 km per hour. देखो बदोदरा रे इनॉग्रेट करा जाइछि प्राइम मिनिस्टर को द्वारा. Andhi village's journey to zero waste transformation. Andhi is a small village in the Jaipur district of Rajasthan that is working to become a zero waste model. Andhi village in Rajasthan working on a zero waste model with the help of green technology. The village has implemented a number of technology interventions to convert waste into sources, including organic waste, methanation plant, vermi filtration technology, constructed wetlands and resource recovery center. एबे आपण देखुथिबे जो म्युनिसिपालिटीज गुडिको बर्तन से माने काम करछन वेस्ट टू वेल्थ. यू वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट कोन वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट होची जो आपनकर वेस्ट मटेरियल गुडिक अछि सेठू आमे वेल्थ यानी कि रिसोर्सेस जनरेट करिवु. वी नीड टू जनरेट रिसोर्सेस in the sense कि लेट्स से
इलेक्ट्रिसिटी हो पारे या आपणकर फ्यूल फ्यूल हो पारे तेणु ये जिनस गुड़े को बर्तमान डेभलप करा आंधी जो आपनकर स्मॉल विलेज राजस्थान अच्छी से जीरो वेस्ट मॉडल रे काम करुच्ची को टेक्नोलोजी को इंक्लूड करा जाइए ऑर्गेनिक वेस्ट बायोमिथेनेशन प्लांट वर्मी फिल्टरेशन टेक्नोलॉजी constructed wetlands and resource recovery center. These technologies are being used to convert waste from a variety of sources including schools, agricultural fields, community health centers into resources. तो ये सब जगह से मैंने वेस्ट को कलेक्ट करिए एंड देन दे विल कन्वर्ट इनटू रिसोर्सेस. The village journey to zero waste has been documented in a film titled Zero Waste Andhi Village by the B. Lal Institute of Biotechnology. Bhubaneswar receives City with Best Public Transport System Award. Urban Mobility Services MoBus and MoE-Ride fetched Bhubaneswar the city with Best Public Transport System Award from the Ministry of Housing and Urban Affairs. Housing and Urban Development Minister Krishna Chandra Mahapatra received the award from Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal Khattar at the 17th Urban Mobility India Conference and Expo at Gandhinagar in Gujarat. Then Bhubaneswar wins the city with the best public transportation. Pratidino MoBus gote na gote accident jemith ho seman koruchan. MoBus and MoE-Ride. DurasARA Geological Park set to achieve India's first IGBC certification. देखिए DurasARA Geological Park. DurasARA Geological Park. Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu announced 30th October that the DurasARA Geological Park, located in the Bankhandi area of Kangra Tehra Assembly constituency, will be the first zoo in India to receive certification from the Green Building Council, Indian Green Building Council. तो IGBC certification exactly कौन? IGBC certification होची Indian Green Building Council तरफ तक मन को certificate मिली ची, right? DurasARA Geological Park located in the Bankhandi area of Kangra Dehra Assembly constituency. The certification will recognize zoo's commitment towards sustainable and eco-friendly infrastructure, setting a precedent for conservation effort in the country. ठीक अछि. तो फर्स्ट तो एटा को जानिया को चेष्टा करिवे DurasARA Geological Park कोठी अछि, that is in Himachal Pradesh. ताको फर्स्ट IGBC certification मिली छि कोन भाई ना eco-friendly sustainable and eco-friendly infrastructure and conservation method, right? Economy. October GST collection surged by 8.9% year on year to reach 1.87 lakh crore. Goods and services tax collection in October reached 1.87 lakh crore, marking an 8.9% increase year on year. This robust collection based on September sales represents the second highest level of monthly GST collection since the indirect tax regime inception in July 2017. तो July 2017 रो जब लॉन्च होई GST यूज सेकंड मंथ जोटा कि हाईएस्ट कलेक्शन आपनकर GST होई 1.87 लाख करोड़. ओके, द राइज इज प्राइमरली अट्रिब्यूटेड टू स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस जेतु फेस्टिवल सीजन थिला तेणु डेफिनेटली आपनको मिलिबो with revenue from imports experiencing slower growth as detailed the Ministry of Finance in data released on Friday. GST, the Goods and Services Tax Act, was passed in Parliament on 20th March 2017, came into effect on 1st July 2017. Came into effect July 2017 रे एटाको लागू करा जायतिला all over the country. प्रथम state to implement GST answer करिवे. Goods and Services Tax is a comprehensive tax levy on
manufacture, sale and consumption of goods and services at a national level. GST is a tax on goods and services with value addition at each stage, include many state and central level indirect taxes, overcomes drawback previous tax system. ठीक अच्छे तो जीएसटी एक तो कलेक्शन देखिले हमें जीएसटी होची आपण जानथिबे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स न्यू रिजीम टैक्स जोटो हमें डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहूचे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ओके UPI transactions reached record high in October with 23.5 trillion in value. UPI transactions सबुठु अधिका Unified Payment Interface, Immediate Payment Service, IMPS, FASTag, Aadhaar enabled payment system. The increased adoption of these platforms highlights India's ongoing shift towards digital payment solution driven in part by the festive season and growing acceptance among the merchants and consumers alike. तेणु year on year या month and month देखिबे आपण UPI रो record transactions होउची because now जो छोटो छोटो merchants गुडी को अछंदी traders गुडी को अछंदी have also accepted UPI and UPI आपण जानिथिबे जेहेतु easy to payment UPI light भी आपण को आसीची तेणु सित पे आपण देखिबे transaction सबुठो अधिका होउची only to password आपण देखिबे UPI हवा फलर हमर खर्च भी अधिका होउची if you carry the cash खर्च कम हबो कारण कैश सबोले पय न थाए you need to visit या revisit ATM time to time UPI रे सबुठो अधिका खर्च आपण को देखिबा को मिलिबो कारण frequently आपण खाली गोटे पासवर्ड देकी आपण ट्रांजैक्शन करि परिबे ओके Science and Technology Surum AI launches new language model for Indian languages. Surum AI, artificial intelligence, a rising player in India's generative AI sector, has introduced a new language model named Surum 1. Surum 1. This model is specially designed for Indian languages and open source. It supports 10 Indian languages including Bengali, Hindi, Tamil, as well as English. Launched in October 2024, Surum follows the company's earlier model, Surum 2B, which debuted in August 2024. तो जो AI आपनकर अछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका इंडिया नुहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू लैंग्वेज से मन उटे लॉन्च करछनी Surum AI ओके को लैंग्वेज रे अछि आपनकर बेंगली हिंदी तमिल इंग्लिश 10 Indian languages. India AI and Meta launch generative AI center at IIT Jodhpur. AI and Meta announced an important collaboration. They launched the Center for Generative AI, Srijan, at IIT Jodhpur. Center for Generative AI, Srijan at IIT Jodhpur. The initiative aims to advance open source artificial intelligence in India. Okay, open source. It also includes the UB initiative for skilling and capacity building in partnership with the All India Council for Technical Education, AICTE. Meta will support the establishment Center for Generative AI, Srijan at IIT Jodhpur. The center also known as the General AI COE, designated to advance research and department. So, you मन रखिबे को जगह सेंटर टी होची AI सेंटर IIT जोधपुर कहारो कोलाबोरेशन रे मेटा जो आपनकर फेसबुक हो इंस्टा हो व्हाट्सएप हो तार जो कंपनी प्लस इंडिया AI जोटा अच्छी कंपनी से मनकर मिलित एफर्ट रे ये सेंटर टी होची कोठी IIT जोधपुर रे डिफेंस देखिबा Indian Army departs for 15th edition of Joint Special Forces exercise Vajra Prahar. Vajra Prahar kaha सहित हुए India and US, Indian Army and US Army. Indian Army contingent embarked on a journey to participate in the
15th edition of India US Joint Spatial Force Exercise Vajrapahar केबेटू होची November 2 ରୁ November 22 20 days रो prestigious exercise will take place at the Orchard Combat Training Center in Idaho USA so US रे टकू कंडक्ट करा जाउची marking a significant step towards bolstering military cooperation tactical interoperability between two nations. The previous edition was held in Umroi Meghalaya last time December 2023 रे हितला एटा उमरोई मेघालय रे हितला ठीक अछि लास्ट एडिशन ए एडिशन टी कोठी होची यूएस रे होची शोकेसिंग कमिटमेंट टू ऑनगोइंग कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड मिलिटरी एक्सरसाइजेस environment Lahore becomes world most polluted city Lahore's air quality reached alarming levels with the city's air quality index approaching 700 marks the city's overall AQI has been recorded at 690 placing Lahore at the top of world's most polluted cities list तो सबुठु अधिका pollution होची लाहोर एटा न्यूज रे रहिबा कथा न कारण लाहोर गोटे सिटी सेटा दि पोल्यूटेड हे गला न्यूज रे आसीबा न्यूयॉर्क हे गला कि आउ को गोटे सिटी हे गला ताकू न्यूज रे में देखि परियो एनीवे bilateral news Indian donated solar rooftop light in Sri Lankan religious places India has donated solar rooftop system to Sri Lanka which will be used to lighten up the country's religious location. The handing over ceremony took place at 4 religious locations in Sri Lanka. Hokandara Temple, Sri Anjaneya Temple, Anthony's Church, Mutwal Juma Mosque. So India solar rooftop lightens एटा को कंट्रीब्यूट करूची काहाकू या डोनेट करूची काहाकू श्रीलंका को श्रीलंकार रिलीजियस प्लेसेस रे सेगुडी को इंस्टॉल करा जिवो ओके फर्स्ट प्रवासी परिचय फेस्टिवल हेल्ड इन Saudi Arabia by MEA प्रवासी परिचय is a week-long festival that celebrates India's cultural heritage and connects the Indian diaspora in Saudi Arabia with their homeland. तो Saudi Arabia रे जो इंडियन डायस्पोरा माने अछंदी सेमानक सहित एटाकू प्रवासी परिचय को सेलिब्रेट करा जायतला 2024 एडिशन ऑफ द फेस्टिवल टुक प्लेस एट इंडियन एम्बेसी ऑडिटोरियम तो कोठी हला रियाद रे केबेठु हला October 22 to 28 the festival featured a variety of performances art the festival showcased the art of participating states in dedicated pavilions the festival featured cuisine of participating states. This festival featured the traditions of participating states. Cuisine and traditions को भी display करा जायतिला सेठी. Classical art form. The festival featured classical art forms such as Odissi and Yaksagana. Odissi and Yaksagana. The festival featured folk traditions such as Garva and Lavani. Garva Lavani भी performance देखिबा को मिलिबो. Musical performance भी हिची Qawwali and contemporary rap. The festival also included exhibition by 13 Indian women artists from Indian diaspora. The exhibition was inaugurated by Indian ambassador to Saudi Arabia, Dr. Suhail Azaz Khan. Dr. Suhail Azaz Khan जे कि Indian ambassador to Saudi Arabia अछंदी inaugurate करथिले से. Sports. Pro Kabaddi League wins Best Sports League at CII Awards. The Pro Kabaddi League was awarded the title of Best Sports League of the Year at the CII Sports Business Award 2024 held in New Delhi. Pro Kabaddi League. Best Sports League of the Year. The award ceremony took place during the Confederation of Indian Industry CII द्वारा एटाको दिया जाइथिला coinciding with the launch of the league's 11th edition.
Chirag Chikara leads India to gold at Under 23 World Wrestling Championship. Chirag Chikara made history by becoming only the third Indian wrestler to win Under 23 World Championship, contributing to India's impressive total of 9 medals at the tournament. So, wrestling championship रे third Indian हिसाब रे से Under 23 विजय लाभ करिछन. Competing the men's freestyle 57 kg category, Chikara secured a thrilling victory with a narrow 4-3 win over Abdulmalik Karshov of Kyrgyzstan in the final seconds of the match. Chirag Chikara, मन रखते हुए नाटक. Ravindra Jadeja climbs to 5th spot in India's test wicket list. Ravindra Jadeja achieved a significant milestone by becoming the 5th highest wicket taker Indian Test cricket. The feat was accomplished on the first day of the third Test match against New Zealand, where Jadeja surpassed Ishan Sharma's wicket tally. First, Anil Kumble, Ravichandran Ashwin, Kapil Dev, Harbhajan Singh, and then the Ravindra Jadeja. Index India's ranks 176th in the Global Nature Conservation Index. 176 in the Global Nature Conservation Index. Score कितने 45.5 out of 100. Developed कहाँ द्वारा करा जाइए Goldman Sonfeld School of Sustainability and Climate Change. Goldman Sonfeld School of Sustainability and Climate Change at Ben Gurion University and Boudh.com. The index aims to provide a clear analysis of each country's conservation strategies. Best performing countries, Luxembourg score 70.8. 176th in the Global Nature Conservation Index. Okay. कहाँ द्वारा डेवलप करा जाइए गोल्डमैन सोनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज. India ranks 79th in Rule of Law Index. Rule of Law. 79 out of 142 in the Rule of Law Index published by World Justice Project. मन रखते बेटे को World Justice Project ता द्वारा Rule of Law Index को पब्लिश करा जाए. 2024 रे इंडिया रैंक केते 79. Rule of Law Index actually कौन देखिबा को मिले ना state of governance, fundamental rights and business environment in India. Scandinavian countries and Nordic countries का मन को भीतर है. Denmark tops the list while Venezuela ranks the lowest. Denmark tops the list. Appointment: Rajesh Kumar Singh takes charge as new Defence Secretary in the South Block. Rajesh Kumar Singh, a distinguished 1989 batch Indian Administrative Service officer, Kerala cadre, officially took charge as the Defence Secretary of South Block. Mr. Singh succeeds Giridhar Armane, 1988 batch IAS officer from the Andhra Pradesh cadre, who retired from his service on October 31st, 2024 after serving a notable 2-year term in his crucial role. Dr. Jacqueline Arrows Hooks appointed as the Secretary General of the World Agriculture Forum. Dr. Jacqueline D. Arrows Hawks, in significant leadership development for global agricultural advocacy. Dr. Jacqueline D. Arrows Hawks, the outgoing Director General of the International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics, ICRISAT, is set to take up the role of Secretary General of the World Agricultural Forum. Known for her dedication to sustainable agriculture and food security, Dr. Hooks brings a wealth of expertise and experience of World Agricultural Forum. मन रखते बेटा Secretary General World Agricultural Forum, Jacqueline D. Arrows Hooks. Praveena Rai takes the appointment as CEO and MD of MCX. MCX होची Multi Commodity Exchange of India. Multi Commodity Exchange of India. Praveena Rai has officially taken office as the Chief Executive Officer and Managing Director on October 31st, 2024, embarking on a 5-year term.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया मन रखते बेटा प्रवीण राय. अवार्ड्स Maria Corina Machado and Edmond Gonzalez Urrutia awarded the 2024 Sakharov Prize. European Parliament has announced Maria Corina Machado President-elect Edmundo Gonzalez Urrutia will be the recipient of 2024 Sakharov Prize for Freedom of Thought. Prestigious award recognizes their relentless efforts to restore democracy and freedom in Venezuela. Venezuela रे से freedom और democracy को restore करिवा ପାଇଁ ये award तंको दिया जाउची. Ballon d'Or 2024 highlights Manchester City and Spain's midfielder Rodri won the 2024 men's Ballon d'Or during 68th award ceremony at the Theatre du Châtelet in Paris. Men's Ballon d'Or Rodri of Spain, women's Ballon d'Or Aishana Bonmati of Spain, Gerd Muller Trophy Harry Kane of England, Yassin Trophy Emiliano Martins of Argentina, Copa Trophy Lamine Yamal of Spain, Socrates Award Jennifer Hermoso of Spain, Women's Johan Cruyff Trophy winner Emma Hayes of England, Men's Johan Cruyff Trophy winner Carlo Ancelotti of Italy, Women's Club of the Year Barcelona Femini Club of Spain, Men's Club of the Year Real Madrid Club of Spain. So list of Ballon d'Or highlights. Sri Ravi Shankar honored with Fiji's highest civilian award. Fiji जो आइलैंड गोटे अच्छी तार ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अच्छी क्या मिली गुरुदेव श्री रविशंकर संत. Talukdar receives Hari Missile Award for Conservation. Vibhav Kumar Talukdar received the Hari Missile Award for his conservation leadership. This honor was bestowed by the Species Survival Commission of the International Union for Conservation of Nature. The award ceremony took place during the 5th IUCN SSC Leaders Meeting in Abu Dhabi. Species Survival Commission. AIFF wins the AFC President's Recognition Award for Grassroots Football. All India Football Federation was conferred with the prestigious President's Recognition Award for Grassroots Football during the AFC Annual Awards in Seoul. Okay. So All India Football Federation को कौन मिलची prestigious President's Recognition Award for Grassroots Football. Vivek Devroy, Chairman of Prime Minister Economic Advisory Council, recently died. Vivek Devroy, prominent economist, chairperson of Prime Minister's Economic Advisory Council, passed away at the age of 69. He was recently admitted to AIMS for the treatment. Following his health, Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Devroy, recognizing his significant contribution to the field of economics. Vivek Devroy. Dates: 1st November, National Unity Day. 2nd November, International Day to End Impunity for Crime Against Journalists. And 3rd November, World Jellyfish Day. Miscellaneous. Solex Energy partner with SBI for solar project financing. Solex Energy has partnered with the SBI. Solex Energy with the SBI to provide financing option for the solar projects targeting commercial, industrial and institutional customers. Under this collaboration, SBI will offer loans up to 10 crore through his Surya Shakti Solar Finance Scheme, aiming to make solar energy more accessible and affordable. Loans up to 10 crore. So 10 crore loans provide karajibo. Solex Energy and State Bank ro collaboration re financing the solar project. SBI and India Exim Bank breach trade financing gaps in Africa.
the State Bank of India and India Exim Bank are actively supporting businesses in African countries by addressing the trade finance gap, meaning कि जो the credit facilities ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, as highlighted by the South African heads of the two organizations during the Indian Entrepreneurs Forum. Government doubles Mudra loan limit to boost entrepreneurship under Tarun Plus. The government raised Mudra loans, जो MSME sector को जो loan टी दिया जाए, Mudra loans under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना from 10 lakh to 20 lakh. अगर 10 lakh थिला, 20 lakh करा दिया जाइए under a new category Tarun Plus to further supporting budding entrepreneurs and enhance nation's entrepreneurial system. The increase in loan limit aims to fund the unfunded by providing financial support to emerging entrepreneurs who have successfully repaid loans in their previous Tarun category. The Tarun category से मन already loan जो नहीं थे repaid करी चंदी, Tarun Plus category से मन को दिया जीवो 20 lakhs, right? Business को enhance करेगा पाए. Reserve Bank of India cancels authorization certificate of UAE Exchange Center. The Reserve Bank of India revoked the certificate of authorization of UAE Exchange Center for failing to comply with regulatory requirements. Authorization, certificate of authorization of UAE Exchange Center. MCQs देखिवा. Who has won the Women's 2024 Ballon d'Or Award? Ballon d'Or Award answer होची आईताना बोनमाती. हमें देखी थिले बर्तमान डिस्कस करथिले आईताना बोनमाती. Which bank has partnered with Solex Energy to offer solar project financing under the Surya Shakti Solar Finance Scheme? Surya Shakti Solar Finance Scheme, that is State Bank of India. Discuss करथिले हमें. What is the rank of India in the Rule of Law Index 2024 released by the World Justice Project? World Justice Project, that is 79th rank. 79th rank. Prime Minister Narendra Modi and Spanish counterpart Pedro Sanchez has inaugurated the Tata Advanced System Facility in Vadodara, Gujarat, which is the country's first private military aircraft factory. This is the first private sector final assembly line for military aircraft in India where aircraft will be manufactured. तो तारो ना actually से पहुँचा C295 aircraft. In which country did Ministry of External Affairs organize first Pravasi Parichaya Festival in October 2024? सेटा होची आपनकर Saudi Arabia. Saudi Arabia. Okay. So that's it. तो ये थिला आपनकर सप्ताहर करंट अफेयर्स. सो एवरी फ्राइडे आमे नहीं के आसीबो आपनकर पई करंट अफेयर्स 11 AM रे. ये समय को भी मन रखथिबे एवं गोटे वीक रो पूरा करंट अफेयर्स को आमे डिस्कस करबा एवं किछि एमसीक्यूज मध्ये डिस्कस करबा. ठीक अछि. तो आज पई एति की पूर्ण देखा हो नेक्स्ट वीडियो रे. एंड जो माने रेगुलरली फॉलो करूचंदी मैं एक्सपेक्ट करिवि कि आपण माने लाइक करिवे, शेयर मध्ये करिवे, सब्सक्राइब मध्ये करिवे. ठीक अछि. थैंक यू.